वेलकमिंग यू अदिति वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत ज़रूरी है ये जो एक मुश्किल एग्जाम है और इसमें सक्सेस मिल गया। दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाबी मिली और जो आईएएस फर्स्ट प्रेफरेंस है, सो यू वांट टू बी एन आईएएस? यस सर। ओके, तो आईएएस और जो सोचा था वही उस दिशा में शुरू हो चुका कदम। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, लेट्स से अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, कितने अटेम्प्ट्स देने का प्लान बनाया था? सर मैंने ऑनेस्टली इस चीज के बारे में सोचा नहीं था। मैंने बस ये सोचा था कि मैं अपना 100% दूंगी और अगर नहीं होता है मतलब फिर था कि हाँ ठीक है सेकंड अटेम्प्ट देख लेंगे। बट मैंने इतनी मेहनत फर्स्ट अटेम्प्ट में करने की कोशिश की थी कि मुझे बस दोबारा देना ना पड़े। और क्विकली रन अस थ्रू योर बैकग्राउंड की, जैसे पहले की पढ़ाई कहाँ से करी, कौन सी करी? यस सर। सो मैंने स्कूलिंग तो अपनी बरेली से ही की थी एंड उसके बाद मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी एंड उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज स्विच किया था एंड आई गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई डिड बीए ऑनर्स इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, वाओ नाइस। कहाँ से? जीसस एंड मेरी कॉलेज। अच्छा, वाओ ग्रेट। Yes, sir. So then since I had done my graduation in sociology, I had decided way before in school itself that I want to appear for this exam. Hence, this shift was also was there in my mind that it will help me build my optional base as well as I would get time to get familiarized with the subjects of GS 1, 2, 3, 4. After graduating, I took my classroom course from Vajiram because I did not know whatever personal sources were there. There was no one to guide me. So the major suggestions were that you can take a classroom program and then you can think on it. So that was my initial base. So the coaching went up till March 2022, and post that, coaching would only help me in just giving me a base. Like these are the concepts, this is the boundary that you have to maintain for yourself. These are the subjects, and post that, I think there was only 2 months before my prelims. So I did not know how to do, what to do. So some people suggested, I mean, it was majorly peer group discussions and suggestions from internet that I took. So I joined, I downloaded a lot of test series from here and there, and I joined Abhyas program for that. Okay. This is how I just went with the flow and I solved a lot of question papers, a lot of mocks during those 2 months before my prelims. And when I actually sat for my prelims last year, I was quite sure that I'll score a good mark in paper 1. So immediately after that, I started with my mains preparation. Okay. I couldn't do it before. I couldn't do it because my coachings were on. So I didn't get any time for answer writing session and for building up on sociology or anything else. So that was the 3 months that I got after my prelims. That was the only time period where I prepared for mains. Okay. I had joined Insights IAS mains test series because that was available to me. Somebody suggested, I joined it. Right. So that's how it went like, and I relied more on personal self-evaluation during my mains. So that's how it went. अच्छा, तो जो 3 महीने में you started and उसी में मेंस निकाला है? Yes sir. और ये दिस इज समथिंग रिमार्केबल, क्योंकि जैसे ये जो एक लग रहा है कि अभी मैंने जो जितने बच्चों से बात की है जिनके रैंक्स आते रहते हैं, तो एक चीज लगती है कि यूपीएससी था दिमाग में लेकिन कर लेंगे, सोच लेंगे, बट यू हैड इट इन योर माइंड थोड़ा सा पहले से और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अपनी करियर चॉइसेस और मे बी ग्रेजुएशन की चॉइसेस वैसे करी हैं। ओके ग्रेट। ये दिस साउंड्स लाइक रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि ये फोकस का लेवल डिफरेंट है। ओके, I would like to say for sociology, I saw, I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos and I'm so thankful to that day that I was scrolling it, and I came across those small topic videos where I could just, since I had already known those subjects, those concepts, but those videos helped me just collaborate all the things together. Okay. Just summarize all things together really well, which helped me in making short notes for my mains. Okay. ये हाँ, और राधा मैं तो देख रहा हूँ जैसे जो बच्चे जो खुद से करते जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं और सेल्फ अवेयरनेस का लेवल बहुत ही बढ़िया है। और जैसे ना एक चीज है, जैसे सोशियोलॉजी, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, सोशियोलॉजी फार मोर देन आई डू। तो मैंने तो इंजीनियरिंग करी, उसके बाद यूपीएससी एक्सेट्रा में थोड़ा सा जो ज्ञान इकट्ठा करके वहां पर कोलैबोरेट कर दिया यूपीएससी। सर वो बहुत हेल्पफुल था बिकॉज कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया था जब मैं सोशियोलॉजी के आंसर्स लिखने शुरू किए थे अपनी नॉलेज से, वो कभी कभी रैंडम हो जाते थे बिकॉज मेरा नॉलेज बेस थोड़ा वास्ट हो जाता था। तो जब मैंने वो वीडियोस देखी, मेरा नॉलेज बेस को मैंने कंस्ट्रक्टिवली एक जगह पर सॉलिडिफाई किया
कि मुझे इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, इसी ओके में मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो इट हेल्प मी इन मेकिंग शॉर्ट नोट्स। ओके कि अच्छा पहले सोशियोलॉजी का स्कोर क्या आया? सर मेरा स्कोर आई थिंक 289 है। 289, वाओ नाइस। Yes, sir, I can just check if you just give me a minute. राइट, I think it's 289 only. 289, ओके Yes, sir. It's 289. I scored 136 in paper 1 and 153 in paper 2. वाओ दैट्स अ लॉट। मतलब 150 पेपर 2 में अभी तक का हाईएस्ट सुना मैंने, इतना नहीं सुना। तो ओके तो अब अच्छा एक यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आती है कि पर्टिकुलरली जो जैसे ना हम तो ऑनलाइन मोड में, तो वी रिसीव अ लॉट ऑफ ईमेल्स एंड कॉल्स। तो एक बच्चे जो हमें पर्टिकुलरली जो मोस्टली फ्रॉम गर्ल्स, जो एज द सोसाइटल सेटअप हैज इट, कि पर्टिकुलरली फैमिली का प्रेशर वगैरह कुछ था तुम्हें, या फिर कैसे हाउ डिड यू हैंडल इट इफ देयर वाज सम? Actually, since I was a little younger than I think my fellow candidates, I was not under direct pressure. Okay. But as a woman, of course, there are certain constraints that you have, and even though you are not told explicitly, but there are always societal constraints on us. So we are generally told that you can give your best, but I mean 2 or 3 attempts. It's there. The mindset is there. So it was always there at the back of my mind, but I didn't let it come forward. I was very sure that I want to put my heart and soul into it in the first attempt itself, and rest I'll see what happens. तो अच्छा अब जैसे और एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन और है, मैं तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आई एम आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, कोई ग्रुप में पढ़ते थे आप, या फिर जैसे बिना अकेले सेल्फ स्टडी, अकेले अलोन? Sir, I think it depends from person to person. So I have friends who who are more productive when they are with a group and with a competitive environment. So that gives them the motivation. However, in case of people like me, for example, we tend to perform better when we are alone. Okay. We are self-motivated to an extent, and whenever I am with a group, I tend to lose my productivity to some extent. Like, did you read newspapers or some magazines? Current affairs कैसे cover करते थे? Otherwise अभी बोलते हैं मैंने magazines पढ़ ली थी, बस मेरा काम हो गया था। No, sir. I think this is where UPSC is trying to. They're trying to level up the game. Newspaper, there's no substitute to reading newspapers, and especially when UPSC is giving more questions on random. So I've observed for the past 2-year trends that they're asking questions which are generally in news, might not be covered by coaching institutes also. Because they're very generic, and it remains in your subconscious if you're reading the newspapers every day. So newspaper reading is more important than magazines, I would say, for sure. कंपटीशन को भी राइट इमेजिन करना बहुत सही, एक इंपॉर्टेंट एक ट्रेट है कि हर वक्त डरते रहना कि नहीं उसने ज्यादा कर लिया होगा, उसने कम कर लिया होगा, तो इट्स फाइन, अपने पे फोकस करते हैं एंड लेट्स जस्ट मेबी। And so it's very natural because when you go to the exam center and you see fellow candidates over there, and it's very natural to have that anxiety in you. Okay, the other person knows more than me. It happened to me. It still happens to me, and but that is very natural. Just know that the other person is also thinking the same. Right. And what you can do in those moments is just try to imagine certain other things. Like just take off your mind from all this. Just imagine that you are also in the same position as they are. Right. And perhaps you're even better than them. Just imagine that. I think that ease your anxiety. मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ, जैसे मैंने कभी शेयर नहीं किया। 2012 में आई मेड माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड तब सीसैट के मार्क्स ऐड होते थे, तो और आई हैड जस्ट स्टार्टेड एंड तो जीएस में इतना कोई हाथ तेज नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि मैं जाऊंगा और मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। तो लेकिन सीसैट का सहारा था, मैं कैट के लिए पढ़ाता रहा था, तो इसलिए था कि सीसैट में नंबर अच्छा आ जाएंगे, मेरा प्री तो हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो जीएस में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सीएजी 2012, अगर देखेंगे शायद दिखेगा, तो सीएजी क्वेश्चन था एंड आई लेफ्ट इट। मुझे था कि मुझे नहीं आता सवाल, ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, मैंने छोड़ दिया। तो मेरे आगे कोई बैठा हुआ था, मुझे बोलता है कि अरे आपने सवाल छोड़ दिया, आप ये सवाल अटेम्प्ट करो। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं आता। कहते अरे आप करो अटेम्प्ट। मैंने कहा नहीं करना। तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं अच्छा मैं सीएजी की ऑफिस में काम करता हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस इज द आंसर। मैंने बोला कि अब तो मैं पक्का ही नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, ये मेरे को आता ही नहीं, मैं कैसे करूं। एंड जैसे मान लो लेट्स से इफ ही वाज सेइंग आंसर बी नहीं था, आंसर कुछ और था, तो मुझे लगा कि इट्स ओके। हाँ, वो कह रहे हैं मैं सीएजी के ऑफिस में काम भी करता हूँ और उसके बावजूद ही मार्क इट एज बी, तो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे था नहीं करना। तो इसलिए मुझे लगता है कंपटीशन को इमेजिन हम कर ही नहीं सकते कि कोई कौन कितना पानी में है, किसको कितना आता नहीं आता। इट्स ओके, जिसको जितना आता होगा, हमें अपना मैक्सिमाइज करते जाना है और इंक्रीजिंगली बेटर। तो वो तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि ओके, किसी और का तो मैं नहीं देख के घबरा तो नहीं रहा मैं कि हाँ कि ओके भाई इसको ज्यादा आता है कम आता है, मुझे अपना देखना है। So in fact, I remembered of this one quote from
while I was reading through ethics and essay, this one quote has always stuck with me of Socrates, that that I do not know, that this is the main wisdom that we have. So it's okay to not know, and if you really do not know, and if I'm aware that I really do not know, there's always a chance that I can know, I can read more. So it's completely okay. It's completely okay that you don't. जिनसे मेरी बात होती है, I send a few books. मैं आपको कुछ ना books भेजूंगा. जैसे Fukuyama has written a lot of books on how bureaucracies have changed the world, like for good, for better. तो जैसे developed countries हैं, वो developed क्यों हैं? वो bureaucracies के चलते हैं कि how efficient bureaucracies are functioning and how they function in the past. I'll send you one of those books. I'll be really grateful for that, sir.